Salma Limited. It has been asked in exam in question number 3A that Salma Limited has an earning before interest and tax. EBIT. What beta? This is what EBIT, earning before interest and tax, is given, that is rupees 16 lakhs. And 8% debenture of rupees 40 lakhs. What beta? And 8% debentures of rupees 40 lakh is there. Okay. So market value of debt is already given, that is 40 lakhs. The overall capitalization rate, that is weighted average cost of capital, is 10%. See, overall capitalization rate, what overall capitalization rate is also given, that is weighted average cost of capital, which is symbolically denoted by KO, weighted average cost of capital, overall capitalization rate. Got it? It is given in the question. Okay, no need to worry. The company decide to raise further rupees 8 lakh. Now what company have decided to further raise rupees 8 lakh through 8% debentures. So previously the debt was what? 40 lakhs, right? 40 lakhs was the debt. Now after raising 8 lakh, the new proposed debentures, new proposed debt will be 48 lakhs. नॉर्मल सी बात है ना बेटा, पहले 40 lakhs था, अभी 8 lakhs और रेज किया तो 48 lakhs हो जाएगा. सिंपल, कोई सवाल ही नहीं उठता है, right? You are required to compute. What you are required to compute? See here, first one, present market value and present equity capitalization rate. Market value means जो भी है, market value of company, market value of debt, market value of equity, present market value and present equity capitalization rate. That is, equity capitalization rate is denoted by KE. Equity capitalization rate is denoted by what? KE. याद रखना. और overall capitalization rate KO. KO. Right? Now, see what is given next. Equity capitalization rate based on net operating income approach. सवाल ही नहीं उठता. भाई हम लोग net operating income approach ही कर रहे हैं ना बेटा. So net operating income approach, everyone have to remember it. This is covered under capital structure irrelevant theory. What beta? Capital structure irrelevant theory. Got it? याद रखना. Now secondly, ये हो गया. फिर last में also give conclusion and verify. जो बताया था ना last lecture में verification, देखो इधर पूछा है आपको verification. So this sum is for 15 marks. So also give verification, conclusion and verify WACC present and WACC proposed under net operating income approach. So this is the sum. Same फंडा फॉर्मेट सब बताया है मैंने. इसके बेसिस पे आपने लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल भी सॉल्व किया है, आज एग्जाम का सम सॉल्व कर रहे हो, राइट? सो सेम प्रोसीजर, सेम स्टेप, everything will be same. Let's practice it. Come on. So let's start practicing. See, directly what? Start with what? Solution. Salma Limited is what? Company name. What we have to make? Statement of calculating equity capitalization rate. Finally, what we have to calculate? Equity capitalization rate in net operating income approach. So statement of calculating equity capitalization rate, then normal format, number, that is step, particulars, present and for proposed. This is for present, this is for proposed. So let's start. Let's begin. First one is what? You all know. Everyone knows. That is first one. Start with what? EBIT. And EBIT, EBIT is what beta? Given in the question. So let's start with first. First one, first step, EBIT, which is also known as net operating income. Okay, net operating income, that is NOI. So EBIT, देखो question में देखो, EBIT कितना दिया है? 16 lakhs है ना? 16 lakhs. Here also 16 lakhs. Last year का question paper है, याद रखो, 15 mark के सम में आया था ये. ठीक है, EBIT. Secondly, everyone knows what we have to show. This is only we have to show, that is overall capitalization rate is how much. So put it here. Overall capitalization rate. Overall capitalization rate, or it is also known as what beta? WACC. WACC. Okay, and symbolically denoted by KO. So कितना percent है ये बेटा? It is given
10%. So show here 10%, 10%. Already given. Now, beta, next step is what? EBIT, overall capitalization rate. Then next step will come market value of the company. That is total value of the company. What will come? Total value of the company, which is also known as what? Market value of the company. Okay, which is denoted by what? V. V. Right? So step number 3 will be what? Your market value, yeah, total value of the company. Market value or total value of the company, which is denoted by V. And everyone knows what is the formula. Market value of company formula is what? V is equal to EBIT upon KO. That is the simple formula. Formula to calculate V, that is V is equal to EBIT upon what? What? KO. Okay, EBIT upon KO. So EBIT 16 lakh divided by 10%. 10% मतलब 0.10. So करो कितना आ रहा है? सीधा 10 will increase, that is 1 crore 60 lakhs. Yes, I can see the answers. Well done, Harsh. याद रखो जिसका जिसका आंसर आ रहा है, that will be beneficial. Active participation shows very beneficial for you. वो चीज याद रखना, पहले भी बता के रखा है, because that will be in record. So 1 crore 60 lakhs, right? Same आपका इस साइड भी हो जाएगा. Well done. I can see many answers. शाबाश हर्ष, सुनीता, मोहित, रुशिक. Well done. 1 crore 60 lakhs. This is what market value of the company. Okay. Now after market value of the company, what you have to calculate? Market value of debt. And that market value of debt will be deducted. Market value of debt. And beta, you all know market value of debt is given directly. It is given directly in the question. So write down. अच्छा ये मैं इधर दिखा देता हूँ, ये रुपीज है, सब रुपीज में ही है ये सब. ठीक है. Market value of debt. So market value of debt is given, that is rupees 40 lakhs. And here rupees 48 lakhs. बेटा इधर 48 lakhs क्यों हो गया? Because बोला है ना market value of debt in proposed it has been raised by 8 lakhs. Further it is raised by 8 lakhs. So that is why here 48 lakhs. इसको शो कर देता हूँ. कैसे आएंगे? 40 lakhs तो पहले से ही है आपके पास. Plus 8 lakh new raised. Plus 8 lakh what beta? New raised. So this is what market value of debt. चलो अभी now fifth one. बेटा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है अभी. नेक्स्ट अपने को मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. तो हाउ टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी? टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट. सो द आंसर विल, माइनस करो, इसमें से माइनस करो, तो यू विल गेट व्हाट? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. सो आई कैन सी द आंसर्स. वेरी गुड बेटा. सो मार्केट वैल्यू ऑफ what? Equity. Market value of what? Equity. So market value of equity is denoted by what? Symbolically denoted by S. And you know the formula V minus D. V minus D. Okay. So this will be 1 crore 20 lakhs. Yes, I can see the answers. And then after that 1 crore 60 lakhs minus, yes, 1 crore 12 lakhs.
1 crore 1 crore 12 lakhs. Very good. Okay, so we got market value of equity also. And after market value of equity, what will be going to calculate? Yes, I can see the answers. Now earning for equity shareholders. What earning for? What beta? Earning for what? Equity shareholders. Earning for equity shareholders. Now earning for equity shareholders, that is also known as net income. It is also known as what beta? Net income. Here in this case, it is also known as net income. And you all know earning for equity shareholder formula is what? Everyone knows, that is EBIT minus interest. Yes. EBIT minus what beta? Interest. That is the normal formula, common formula. So EBIT minus interest. So EBIT is where? Here 16 lakh minus interest. So अभी इंटरेस्ट निकालना है अपने को. देखो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 40 लाख है ना. 40 लाख का कितना परसेंट है? 8%. इंटरेस्ट तो डेट के ऊपर ही निकलेगा ना बेटा, राइट है. जो डेट है उसके ऊपर यू विल हैव टू कैलकुलेट व्हाट? इंटरेस्ट. सिंपल फंड है, सिंपल. ओके, सो आ जाओ इधर मैं कैलकुलेट कर देता हूं. तो डायरेक्टली आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो इधर मैं ऐसा कैलकुलेट करके दिखाता हूं. ठीक है, तो कितना है पहले? EBIT कितना है? 16 lakhs. EBIT is given 16 lakhs minus interest. कितना आएगा इंटरेस्ट? 8% ऑफ 40 lakhs. यस, आई कैन शो हियर. स्टेप दिखा दे रहा हूं मैं कैसे आएगा. 40 lakhs. तो चलो कितना आ गया इंटरेस्ट? ये पहले इंटरेस्ट इधर ये हो गया. चलो तो 16 lakhs तो है ही आपका इधर. 16 lakhs माइनस 8% ऑफ 40 lakhs. आंसर दिख ही रहा है मुझे. वेरी गुड. 8% ऑफ 40 lakh, दैट इज 3,20,000. 3,20,000. सो क्या आ गया? अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर 12,80,000. वेरी गुड. सो दिस इज व्हाट? 12,80,000. दिस कैलकुलेशन आई हैव शोन स्टेप बाय स्टेप, ताकि बाद में भी आपको टेंशन ना हो. ठीक है, इसे निकाल सकते हो डायरेक्टली. 40 लाख से आपको पता है, ये दिख रहा है सामने, फिर भी दिखा दिया स्टेप, ताकि बाद में आपको कोई इशू ना हो समझने में. सेम इधर. ठीक है, सेम हियर ऑल्सो वही फंडा. इधर भी EBIT सेम है बेटा, ₹16 lakhs minus 8% of here. 8% of what? 48 lakhs. 8% of 48 lakhs. So 16 lakhs minus 8% of 48 lakhs. What will be the answer? 8% of 48 lakhs. 3,84,000. Very good. Very good, beta. Very good. Yes, 3,84,000. $3,84,000. चलो आ जाओ, अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा फिर? Yes, I can see the answers. Very good. Your final answer will be what? 12,16,000. Very nice. 12,16,000. So this is what? Earning available to equity shareholder. Okay, earning available to what? Equity shareholder भी आ गया आपने. चलो अर्निंग भी आ गया ना. अभी फाइनली अपने को क्या करना है? इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट निकालना. इक्विटी कैपिटलाइजेशन rate, that is what? KE. Equity capitalization rate is denoted by what? KE. ठीक है,
And you all know KE formula. KE formula is equal to what? Earning available to equity shareholder. Earning available to equity shareholders, right? Earning available to equity shareholder divided by what? S. S means market value of equity multiplied by 100. It will be multiplied by what beta? 100. Simple. Okay. So चलो इधर ही निकाल लो, कैलकुलेट कर लो, आ जाओ. Come on. So directly क्या है बेटा? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर दिख रहा है आपको? वन कितना है? 12,80,000. 12,80,000. 12,80,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. ये देखो, ये रहा. दिस इज व्हाट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज व्हाट? 1,20,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है? व्हाट विल बी द आंसर? यस, 10.67. 10.67%. ओके, चलो अब इसका निकालो. तो सेम अपने लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही आ गया. ठीक है, रुपीस इधर क्या हो गया? 12,16,000. देखो कितना सिमिलर पूछा था अपना क्वेश्चन एग्जाम में, जो मैंने कराया था लास्ट लेक्चर में. उसके पूरे सेम बेसिस है, खाली अमाउंट डबल किया बस. 12,16,000 डिवाइड बाय रुपीस 1,12,00,000. 1,12,00,000 multiplied by 100. So what will be the answer here? Yes, 10 point. Very good. 10.86. Finally 2 digit तक ले लेना. 10.86%. Very nice. तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर. This is what our final answer, which we have calculated here. Okay, got it? Clear? चलो अब सबसे मेन अपना वही स्टेटमेंट एज कॉमन जैसा लास्ट लेक्चर में लिखा है. आ जाओ, ये सबका ये डन. चलो आ जाओ, स्टेटमेंट दिखा दो. सिंपल स्टेटमेंट कंक्लूजन में. Same statement as you have written in last lecture also, as net operating income. क्या? As net operating income approach, as net operating income approach is what? Is a capital structure what? Irrelevant theory. Capital structure irrelevant theory. So any changes in combination, any changes in combination of what? Debt and equity. So any changes in combination of what beta? In combination of debt and equity. Any combination, change in any combination of debt and equity, right, does not affect the market value. Does not affect the market value of the company. Does not affect the market value of the company. That is WACC
where WACC also remains constant हो जाएगा. That is WACC remains constant. So simple statement, right? As net operating income approach is a capital structure irrelevant theory. So any change in combination of debt and equity does not affect the market value of company, right? Whereby weighted average cost of capital remains constant. Market value of company as well as यहाँ दिखा सकते हैं as well as weighted average cost of capital remains constant. ये इधर as well as what weighted average cost of capital remains constant. Show idea. Okay, चलो हो गया. अभी now the part is what verification. We have to do the verification also. So verification, for doing the verification, right, what we have to do, वेरिफिकेशन के लिए फंडा याद रखो. क्या करना पड़ेगा अपने को? फॉर्मूला याद रखो. क्या है वेरिफिकेशन के लिए? सिंपल फॉर्मूला, सब लोग याद रखना. फॉर्मूला इज व्हाट, इधर लिख देता हूं मैं. कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय डेट अपॉन total value of the company, market value of the company, D upon V, right? Cost of debt into D upon V plus cost of equity plus what बेटा, cost of equity multiplied by S. S तो पता ही है, market value of equity upon V, total value of the company. सिंपल फॉर्मूला. पहले फॉर्मूला लिख लो फटाफट, एवरीवन नोट डाउन. उसके बाद हम वेरिफिकेशन करेंगे उसका. नोट इट डाउन. कम ऑन. ओके, चलो. Now first verification will be done for what? WACC present. आ जाओ, किसका बेटा? WACC present. चलो, for WACC present, very simple. Cost of debt is what? 8%. Cost of debt is what? 8% multiplied by D upon V. So D is what? 40 lakhs. D is what beta? 40 lakhs divided by what? 1 crore 60 lakhs will be the value of company. ये देख रहे हैं आप? Value of company कितना है present? 1 crore 60 lakhs. So 1 crore 60 lakhs plus cost of equity, present cost of equity is what? 10.67%. 10.67% multiplied by S. S means market value of the equity. Market value of equity 1 crore 20 lakhs or total value of the company 1 crore 60 lakhs. So this is what? 1 crore 20 lakhs divided by what? Value is what? 1 crore 60 lakhs. Okay, चलो आ जाओ. 8% can be written as 0.08 multiplied by, चलो ये कितना आ रहा है? 40 lakhs divided by 1 crore 60 lakhs. Calculate it. 40 lakh divided by 1 crore 60 lakhs कितना आ रहा है? डिवाइड करने पे फटाफट करके बताओ कितना आया. डिवाइड किया तो हाँ, वेरी गुड, शाबाश हर्ष. 0.25.
यस, और भी आंसर दिख रहे हैं मुझे, वेरी गुड। हर्ष, ऋषिक, मीनाक्षी, मेघना, सुनीता, विदिशा, वेरी गुड। 0.25 and 10.67 can be written as 0.1067 1, right है, 0.1067 multiplied by 12 lakh divided by 1 crore 20 lakhs divided by 1 crore 60 lakhs. So इसका कितना आया? 0. Okay, 0.75. वेरी गुड, वेल डन, 0.75. चलो, फाइनली जो भी आंसर रहेगा दैट विल बी इन 2 डिजिट. ओके, सो ये होने के बाद आ जाओ 0.08 इंटू 0.05, तो 2 डिजिट पे कन्वर्ट करना. 0.02 आ गया प्लस 0.1067 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो इसका कितना आ रहा है? हाँ, 0.2 डिजिट में कन्वर्ट करना, 0.08. ओके, ठीक है, तो 0.02 प्लस 0.08 कितना आ गया? 0.1. 0.1 कैन बी रिटन एज 0.10 ऑल्सो, कोई टेंशन नहीं. एंड फाइनली वी वांट आंसर इन परसेंटेज. ठीक है, तो परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100 कर दो बस. तो क्या आ जाएगा? इंटू 100 किया तो परसेंटेज आंसर विल बी व्हाट? 0.1 भी किया तो फिर भी ओके. परसेंटेज से अपने को डायरेक्टली आइडेंटिफाई होता है बस, और कुछ नहीं, लेमेंस को भी समझ जाएगा. सो दैट इज व्हाट 10%. व्हाट 10%. So this is what WACC present. WACC present. WACC present 10% आ गया बेटा. अब प्रपोज भी देखो 10% ही रहेगा, तो वेरिफिकेशन हो जाएगा. यस, ये अपना जो so any change in combination of debt and equity does not affect the market value of the company as well as weighted average cost of capital remains constant, right? So present तक तो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था उस समय. जो प्रपोज का भी सेम करना है आपको, सेम. So now WACC present, proposed. WACC proposed. फॉर्मूला विल बी सेम, वही फॉर्मूला यूज करना है बेटा आपको. तो चलो, फॉर्मूला सेम है. तो प्रपोज्ड में 8% तो आपको पता ही है डेट है, मल्टीप्लाइड बाय डी अपॉन बी. अब प्रपोज में डेट कितना है आपका? 48 lakhs. डेट है 48 lakhs डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी आपको पता ही है 1 crore 60 lakhs, राइट? प्लस इधर आ जरा, इक्विटी कितना है प्रपोज में? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 10.86% है, इनटू एस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है 1 crore 12 lakhs. 1 crore 12 lakhs डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी है 1 crore 60 lakhs. 1 crore 60 lakhs. चलो एवरीवन फर्स्ट पुट योर अटेंडेंस. एवरीवन फर्स्ट पुट योर अटेंडेंस बेटा, फास्ट. सो लेट्स डू इट. पहले अटेंडेंस डाल दो सब लोग. अटेंडेंस 8% कैन बी रिटन एज 0.08 मल्टीप्लाइड बाय, जिसका अटेंडेंस हो गया वो आंसर देना है इधर बस, बाकी सब अटेंडेंस डाल दो फटाफट. 48 lakh divided by 1 crore 60 lakhs. Yes, I can see the answer 0.3. Very good beta. 0.3 plus 10.86 can be written as 0.1086 multiplied by 1 crore 12 lakh divided by 1 crore 60 lakhs. Yes, I can see the answer in chat box. 0.7. Okay, very good. 0.7, right? चलो अभी फाइनली आंसर विल बी कन्वर्टेड इन 2 डिजिट. फाइनली 2 डिजिट में होना चाहिए. 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 0.03, तो 0.08 इंटू 0.03 कितना आ रहा है? 2 डिजिट में कन्वर्ट करना. सो दैट इज व्हाट 0.02. ओके, प्लस 0.1086 multiplied by 0.7. So multiply it and convert it in 2 digit only. 2 digit में. So कितना आ रहा है?
फाइनली 2 डिजिट में क्या दो, 2 डिजिट में 0.08, ओके 0.08, आगे भी आंसर आएगा 0.08 फिर आगे, बट उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट किया है हमने, फाइनली 2 डिजिट में कन्वर्ट होना चाहिए. So 0.02 plus 0.08 will be 0.1, right? Clear? So now convert this into percentage. That's it. चलो कन्वर्ट कर लो परसेंटेज में. तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100. So finally 10% आ गया. So this 10% is what your weighted average cost of capital proposed. WACC what beta? Proposed, right? WACC what? Proposed. Clear है? Okay, WACC proposed. मालूम पड़ गया? So finally सबका अटेंडेंस हो गया ना? Done? Okay. Now this is what weighted average cost of capital proposed, which we have seen here. Now proposed is also 10%, and this is present is also 10%. 10%. It means what? In net operating income approach, what? Weighted average cost of capital remains constant, whether there is a change in debt and equity combination. That's it. That is what our theory. That is why it is known as capital structure irrelevant theory. And we have seen this by doing the verification also. वेरिफिकेशन करके आपने देख लिया कि हाँ भाई ये तो सेम ही है, चेंज हुआ नहीं है. सो ये सम अच्छे से प्रैक्टिस करना वेरी इंपॉर्टेंट सम है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का, कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंट